आप सभी का सुस्वागतम मेरे YouTube चैनल मैथ्सोपीडिया एकेडमी में। तो आज का जो क्लास रहेगा वो रहेगा टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से पहले अगर आपने मेरे पहले के 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो कृपया देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है समझने में। तो चलिए बिना किसी बकचोदी की हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सीरीज़ में क्या है। तो पिछले अभी जो हमने जो 5 लेक्चर्स करे हैं उसमें बहुत मुश्किल आ रही है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालने में। हमको बार बार डेफिनेशन का यूज़ करना पड़ रहा है, पर अब हम जब टेस्ट पढ़ लेंगे तो डेफिनेशन का यूज़ बहुत कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा जैसे कि चाय में चीनी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस का टेस्ट। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। लेट एफ एन बी अ sequence of functions such that limit n tends to infinity f n x is equals to fx for all x belongs to a comma b, and let mn equals to supremum of f n x minus f of x where x belongs to closed a comma b. Then fn converges to f uniformly on interval a comma b if and only if mn tends to 0 as n tends to infinity. तो क्या मतलब है इस थ्योरम का, हम अच्छे से भी समझने वाले हैं। थ्योरम कुछ ये कह रही है कि अगर हमारा कोई भी एफ एन बी सीक्वेंस होगा फंक्शन का कि सच डैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि एफ एन में जब हम इन्फिनिटी को टेंड करा देंगे तो वो एफ एक्स आ जाएगा, एंड कोई एम एन है जो कि सुप्रीमम है इन सब का माइनस करने के बाद जो उनका सुप्रीमम है जहाँ से एक्स मेरा ए कॉमा बी से आ रहा है, तो एफ एन एफ में तभी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ये एम एन जो होगा ये टेंड कर रहा होगा जीरो पे एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफिंग का स्टाइल कुछ एस मलिक से मिलता जुलता है, अगर आपको समझना है तो वहाँ पे भी आप टैली कर सकते हैं। प्रूफ हम मानेंगे सबसे पहले फॉरवर्ड पार्ट। फाइन, लेट हम मानते हैं कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ए कॉमा बी। So by the definition of uniformly convergence, so that for every given epsilon greater than 0 there exists integer n such that this condition holds is less than epsilon for all n greater than equals to n and for all x belongs to close interval a comma b. This implies your mn is supremum x belongs to a comma b fn x minus fx less than is equals to epsilon for all n greater than n. This implies mn tends to 0 as n tends to infinity. So this is your forward part, which is proved by the definition of uniformly
convergence, where this Mn is a supremum of Fn x minus Fx, where since this is Fn tends to F uniformly, then this distance is very small. If this distance is very small, then Mn is always tending to 0 as n tends to infinity. So this is obviously true. Fine. Now we are doing this sufficient part, which is converse of this theorem. So let Mn tends to 0 as n tends to infinity. We now have to prove that this condition is true, that is Fn converges to F uniformly. Fine. Since Mn tends to 0 as n tends to infinity, so that for any epsilon greater than 0, there exists an integer n such that Mn tends to epsilon for all n greater than equals to n. This implies supremum of x belongs to a comma b, Fn x minus Fx is less than epsilon for all n greater than equals to n. This implies Fn x minus Fx is less than epsilon for all n greater than equals to n for all x belongs to a comma b. अगर सुप्रीमम ही सबसे छोटा होगा एप्सिलॉन से, तो सारे नंबर्स तो छोटे होंगे ही ना एप्सिलॉन से. दिस इम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस. अगर आपने मेरे पहले के 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो देखिएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा समझ में. दिस इम्प्लाइज Fn converges to F uniformly on a comma b. So this is the proof of your theorem, and what we get if the sequence Fn is function such that this condition holds, then your Mn, which is the supremum of Fn x minus Fx, where x belongs to closed interval a comma b, then Fn converges to F uniformly if and only if Mn tends to 0 as n tends to infinity. Fine. Now we are going to solve some questions related to this topic. Example: show that what we have to show, the sequence Fn where Fn is equals to nx upon 1 plus n square x square is not uniformly convergent on any interval containing 0. So we have to show that with the help of this test. Fine. So since this is a sequence, so solution, first we have to check its pointwise. Limit n tends to infinity, Fn of x is always be 0 for all x. Fine. Since limit n tends to infinity, if you take n common, 1 upon n square plus x square, this is your 0, and when n tends to infinity, this all tends to 0. That's why it is 0. Now, as we know that your Mn is supremum of x belongs to a comma b of Fn x minus Fx.
For uniformly convergent, it should be tends to 0 as n tends to infinity. This equals to supremum of nx upon 1 plus n square x square minus 0, since fx is 0. This implies if we put what, n equals to m and x equals to 1 by m, which belongs to that a comma b, then this supremum is become your m1 by m upon 1 plus m square 1 upon m square is equals to 1 by 2, which does not tends to 0 as n tends to infinity. Wow, so this implies mn does not tends to 0 as n tends to infinity. So by this test we can say that fn does not converges to f uniformly. Fn does not converge to f uniformly. Since 1 by m cannot be equals to 0, hence origin is discarded or removed. Fine. So this is our answer. Now अब अगला काम हम अगले लेक्चर में करेंगे. तब तक के लिए सायोनारा, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए ये सारी चीज़ें जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ. बाय बाय.